The Kalahandi district in Odisha will soon find a place on the airport map of India after DGCA, the Director General of Civil Aviation, gave green light for commencement of flight operations from the Utkela airport on Monday. The Utkela airport has been approved under the Udan scheme of the Government of India. Following the DGCA nod, Chief Minister Navin Patnaik shared the news on his Twitter handle. The airstrip of Utkela, just 20 kilometers from the district headquarters in Bhawanipatna, was built in 1962. The work on its runway expansion, terminal building, staff quarters, barrack and fire station are almost completed. Earlier, flight operations from Rourkela Airport began on January 7 this year. However, in less than 6 months of the inauguration, flight services from Rourkela have become a headache for commuters with frequent disruption in regular services. As per reports, there were regular cancellations of flights by Air India, which was granted permission by the DGCA to operate from Rourkela Airport. The Archaeological Survey of India ASI on Monday reiterated that the Ratna Bhandar of Puri Shri Mandir needs repairing. The Superintendent of the Archaeology Puri Mandal of the ASI, Dibishat Garnayak, said this after submitting an affidavit in the Odisha High Court regarding the same. रत्न भंडार कंजर्वेशन जोटा कथा उठुची डेफिनेटली कंजर्वेशन तो निहाती दरकार कारण 2018 मसीह जो समय इन्स्पेक्शन होता से समय अनुधान कराइला जे तार जो कांथ अच्छी से भी किसी हॉलो साउंड अच्छी किसी स्टोन फ्रागमेंट भी फ्लोर रे पड़ीला किंबा तांकर जो आमर छात रूफ रे तार जो रट आयरन थिला तार भी कंडीशन ठीक नथिला प्लस वाटर सीपेज रो मध्य कथा उठीला तेणुकर जदि आम देखा 2018 आज को मत 5 वर्ष बीतीगला तो तापर मध्य कोनोसी स्टेप आमर कंजर्वेशन कार्य होई नाही जेहेतु पुराणा अच्छी तेणुक कंजर्वेशन कार्य निहाती दरकार आ जरूरी मध्य जेहेतु एटा पुराणा. It is pertinent to mention here that the Shri Mandir Managing Committee has decided to request the Odisha government to allow the Archaeological Survey of India ASI to reopen and repair the Ratna Bhandar during Rath Yatra 2024. The decision was taken after the ASI shot a letter to the Sri Jagannath Temple Administration SJTA requesting permission to conduct a survey of the Ratna Bhandar. In a startling development in the Indian Parliament, 5 Rajya Sabha members of the Parliament on Monday alleged that their signatures were forged on a motion submitted by Aam Aadmi Party MP Raghav Chaddha for a proposed select committee on the Delhi Services Bill. The accusation has triggered a wave of outrage, with union ministers demanding a thorough investigation and strict disciplinary action against those responsible. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi, addressing the issue, has emphasized that strict disciplinary action will be taken against the incident. A motion will be moved against the concerned member. Joshi has further raised a pointed question at the opposition, seeking reply from the Congress if they too are supporting the people who are forging. The MPs who have raised objections include S. Phangnong Konyak, Narhari Amin, Sudhanshu Trivedi of the BJP, M. Thambidurai of AIDMK and Susmit Patra of BJD. The MPs have collectively alleged that their names were included in Chaddha's proposal without their consent, leading AIDMK's Thambidurai to formally write to the Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar citing forgery. इसी जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था मेरे सुनने में आया तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ हाउस
तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं था, कई सारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, जिनका भी नाम ऐसे डाला गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उस वक्त थे, तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द हाउस विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर। आई हैव गिवन ए कंप्लेन एंड आई सेड दैट प्रिविलेज हैज बीन दिस थिंग। तो प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट करना और उसको मूव करना ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में होता है, मेंबर्स के हाथ में नहीं, बट दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑब्वियसली। उन्होंने भी कंप्लेन फाइल करी है। All of us have filed our respective complaints saying that हमसे consent लिया नहीं गया था before taking such an action. I have raised before itself and give a letter to the chairman referring to the privilege committee. How my name is included, I don't know. I have not signed any document like that. Therefore, somebody may be misused my name and forgery signature would have included. Therefore, I requested the chairman of the Rajya Sabha and refer it to privilege committee and take necessary action whoever misused this kind of thing. Union Home Minister Amit Shah also weighed in during a Rajya Sabha session, expressing dismay over the incident. मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। After the controversy erupted over the development, AAP leader Chadha clarified that he would only answer to the privileges committee when they send a notice. ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। Meanwhile, after an extensive 8-hour debate on Monday, the Delhi Services Bill was passed in the Rajya Sabha with 131 votes in its favor. With the flood water already beginning to recede in most parts of Odisha, waterborne diseases have begun to knock on the doors of people in flood-hit areas, forcing the health department of the state to issue caution. The state government has warned people to maintain hygiene in their homes and nearby areas so that there is not an outbreak of any disease. 48टा मेडिकल रिलीफ कैंप चली 29टा टीम डिप्लॉयड होती विभिन्न जगह काम कर बर्तमान सुधा प्राय ORS 10,000 11,000 ORS बंटा 28,000 ऊर्ध्व हालोजेन बटिका बंटा माइनर एलिमेंट ये फ्लड प्रोन एरिया रे प्राय 1390 लोक ट्रिटमेंट होती 36 डायरिया केस भी ट्रिटमेंट होती हॉस्पिटल कहीं ना माइनर केसेस जो पर्सनल हाइजीन विषय हैंड वाश इत्यादि उपरे सचेतन रे लोक सचेतन कराऊँगी हाथ सफा करेंगे पर्टिकुलाली शौच करने खाइबा पूर्व हाथ निश्चय धोइबा लोक सचेतन कराऊँगी बाकी विभिन्न जगह जो आवश्यकता अच्छी मेडिकल कैंप कराई ट्रिटमेंट जोगे दिया। Meanwhile, there has been a considerable improvement in the overall flood situation in Mahanadi, Baitarani and Brahmani river systems in Odisha. The engineering chief of the Water Resources Department, Bhaktaranjan Mahanti, has informed that the base flow of water is around 4.5 lakh cusecs at Mundali at 9 am today.
while there is not much inflow of flood water into Hirakud reservoir. Business establishments, shops and institutions violating the ODIA signboard norms in the state will now have to pay a hefty penalty as the state government has decided to adopt a zero tolerance policy against the offenders. As part of the special drive, which began in May this year, the offenders will be served a show cause notice and have to pay Rs 5,000 fine in the court of a judicial magistrate in the first instance. If the violator flouts the norm for the second time, she or he will be slapped with Rs 25,000 fine, the government has warned. आम देखिलु जे मीटिंग करिकरी विभिन्न स्टेक होल्डर्स मानक सहित कथा ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ विशेष फलप्रद हेई नाही सेथिपाई एबे एनफोर्समेंट करा जाउछि समग्र राज्य रे वर्तमान से एनफोर्समेंट कार्यक्रम चली तेणु आम आशा करूछु जे ए एनफोर्समेंट जरिया रे आमे ओडिया भाषा रे लेखा हिथिबा साइन बोर्ड गुडी को आमे आगामी दिन रे पाइबा As many as 8 business establishments have been issued show cause notices in Bhubaneswar, while the same has been issued to 148 institutions in Khordha in the last 2 months, sources informed. According to reports, while 61 establishments immediately changed their signboards and affixed ODIA nameplates, cases were lodged against 6 institutions for violating the norm despite several notices. आमे 148 प्रतिष्ठान को बर्तमान शो कज इश्यू करूँ ता भर 61 प्रतिष्ठान तार कंप्लायंस कर सारे 6 प्रतिष्ठान ना आमे मान्यवर अदालत रे डीपीआर भी फाइल करूँ बर्तमान भी स्पेशल ड्राइव आमर चालू रही आगामी दिन में जो मैंने या डिस्प्ले न करेंगे ना मान्यवर अदालत को पाखे डीपीआर फाइल करा जिवो। Notably, the Odisha Legislative Assembly had passed the Odisha Shops and Commercial Establishments Bill 2018, making Odia language mandatory on signboards of shops and business establishments in the state.